Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Pareek, and I'm present with my live class. Kindly show your presence so that we can start the class. Kindly show your presence. I can see Bhavna, Malik ji. Good morning, everybody. And directly open the website and come to my blog, because today I already messaged you that I would be coming 30 minutes late for the class. Good morning, Pushpita, Shatrupa, good morning. And I was surprised that most of you are not on the Telegram channel, because in the night I started a class on cultural studies on my I sent you a message, but most of you were absent. I gave the link of the Zoom class on this Facebook also. I sent the message, the link of the Zoom class on FB also, and both the pages of FB, and in different groups also, and on the Telegram channel also. But then I was surprised that only 10 students joined me. So be aware that I have started classes on Zoom in the night also. So if you have not joined my Telegram channel, I'm saying to the regular students also that some of the regular students who have taken admission in my institute, they have also not the members of the Telegram group. You can search Telegram group under this name Mukesh Pareek. Okay, and suppose you don't find, you can give me a message on my WhatsApp number. I will send you the link, or say I will share this link on the Facebook page also. Okay, I gave the first lecture on cultural studies. As you all know that cultural studies is a separate link, so it will take more than 4 or 5 lectures on the cultural studies. Now directly come to the blog on my website. As I suggested to you yesterday that you should not come to the blog directly, go to my website mukeshpareek.com or englishcosmos.org and directly come to the blog. Today we are going to learn many important things which had already appeared in the exam, so we are going to study them in depth. These are the particular terms related to linguistics either, or grammar, or related to post-structuralism and all. मुझे यस लिख करके बताइए that you have come to the blog and you can see there are different entries. What is the first entry on my blog? Hello friends, go to my blog. My blog is on my website mukeshpareek.com or englishcosmos.org, and go there and you can search my blog there easily. There is one entry under the name of blog, and those who are watching me on this YouTube channel, I request them to kindly like, and at the end of the video kindly write the comments also. Okay, I got answers from 2 or 3 students only. Kindly tell me what is the first entry on the blog so that we can start the class. Can you people hear me? Yeah, interlanguage. This is the first answer. Interlanguage definition and examples. Okay. First of all, as you all know that English language in most of the countries are spoken today, and when we all know that we start talking in our mother tongue in the very beginning, clear? So it is not exactly that we directly learn a second language. For example, I have come across many students who have done their post graduation. Even they are not very much comfortable with this language. So let us understand that interlanguage. Write down in your copy also, in your notebook you should write the term interlanguage. Interlanguage is a type of language, or it is a linguistic system used by second and foreign language learners
who are in the process of learning a target language. Now let me clear this doubt also, that sometimes English language in India is called second language, sometimes it is called a foreign language, sometimes it is called a target language. Okay, so target language can be any language. For example, I am a Hindi speaking person, and suppose I am learning Punjabi. Okay, then Punjabi can be my target language. Okay, so when we are learning a language which is totally foreign, because a language always has certain cultural aspects related to it, certain mythical aspects related to it, then what are the aspects when we call a language totally foreign? एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी मीट एनी पर्सन हु स्पीक्स कन्नडा और से मलयालम और तमिल, तो आपको पता है बहुत सारी उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो वोकैबुलरी है, वो हमें नहीं आती है. ओके, बट एटलीस्ट व्हेन वी से गणेश और गणेशा, they will understand it. Or when they say Shiva or say Krishna, we understand that. Okay, it means these languages, though they have a different origin, Dravidian languages we call them, वो languages बिल्कुल अलग हैं. तो एक up to an extent we can say that when there is no mythological connection, when there is no cultural connection, okay, then we can call a particular language a foreign language. Clear? लेकिन अभी हम जब इंग्लिश की बात करते हैं, तो whenever we are learning, we being students of this language, second language, अगर हम इंग्लिश को second language समझें, and when we are learning, so we pass through a particular phase. Okay, तो एक typical language हम generate कर लेते हैं, उसको बोलते हैं interlanguage. Clear? Somebody saying that on YouTube. Right now I'm delivering this lecture on FB, and after 1 hour I will upload this video on YouTube channel. My YouTube channel's name is Mukesh Pareek Cosmos. Okay, COSMOS. So let us learn now that interlanguage is the type of language, or it is a linguistic system, okay, used by second and foreign language learners, okay, who are in the process of learning a target language. This is a clear-cut definition. Okay, interlanguage pragmatics is the study of the way non-native speakers acquire, comprehend, and use linguistic patterns. I am reading it from my blog. That's why I always ask you that either you should have 2 phones, or you should use the system of split screen on your phone, so that we can read in between, because it is very tough for a student to understand everything when I'm speaking only. Clear? पहले आप मुझे yes लिख के बताइए that you have gone to my blog also simultaneously, and you are also reading from there. Otherwise I won't be very comfortable in teaching you all. Kindly write yes and tell me that you are on my blog and you are seeing, you are looking at, you are reading with me. For that you can use another phone, for that you can use the split screen. That's why I'm inviting you on the Zoom. In the night I will be taking a lecture, and you all should join my Telegram group, so that whenever I send you a link there, you can easily get access to the link and directly join me in the evening. Okay, so अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरलैंग्वेज क्या होता है. इंटरलैंग्वेज होता है नॉन नेटिव स्पीकर का क्या क्या तरीका है सीखने का. ओके, द वेज नॉन नेटिव स्पीकर एक्वायर, कैसे वो एक्वायर करते हैं, हम लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंड कैसे उसको समझते हैं, एंड यूज लिंग्विस्टिक पैटर्न्स और स्पीच एक्ट्स. अब अपनी कॉपी में एक स्पीच एक्ट वर्ड लिखिए. इन लिंग्विस्टिक्स वी पर्टिकुलरली यूज, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसको टेक्निकली we use a technical jargon in linguistics. बोलने को बोलते हैं speech acts, और word को बोलते हैं lexis item. लिख लीजिए. Keep writing yes, so that I feel that you are connected with me. If we are speaking something, we say that it is a speech act. Good morning, Mr. Vikas. Okay, so speech acts in a second language. So we develop a particular language of our own, because this is not our language. English, if we are learning as a foreign language, then we have our own methods of acquiring it, our own methods of understanding it. अब ये इसकी एक साइकोलॉजी होती है. ओके, सो वी कॉल इट साइकोलिंग्विस्टिक्स, कि हम कैसे जैसे आपको मालूम है कि सपोज आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ यू व्हेन यू opted for English as a language,
in your 12th or in your graduation or in your post graduation. Suppose I ask you, like, what was the psychology? So you all know that sometimes we have certain economic ideas in our mind, that if we learn this language, then automatically we will get a job, okay, or we will get some upper hand in society, because this language is associated with power in India, okay. So I was talking about this the definition and how we comprehend. Okay, we comprehend this language in a very different psychological aspects also. Okay, next paragraph I'm reading. Interlanguage theory is generally credited to Larry Selinker. अब ये क्वेश्चन आपको इस बार आ सकता है एग्जाम में. That's why I decided to teach you this. Interlanguage theory is generally credited to Larry Selinker. उसका नाम लिख लीजिए, LARRY, Larry Selinker, SELINKER, ओके, एन अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. अच्छा, कई बच्चों को पता नहीं होता है कि इन लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस. Clear? Applied linguistics is a very common thing, and we, the students of English literature, we are asked certain questions from linguistics also, but they are not the pure linguistic questions. They are very simple questions. For example, I was just speaking about that what are the meanings of speech acts, or what are the speech acts. Sentence का मुंह से निकालना, whenever we utter any sentence, it is linguistically in the technical manner it is called speech acts. Okay, Larry, not Levy, it is Larry, LARRY, Larry Selinger. Okay, and applied linguistics means how the theories or the aspects of language are applied. Okay, there is a very common word, applied, like applied physics. Okay, it means the theory of physics, but when you apply it on your life. For example, applied cooking, like how to cook things, but have you ever entered the kitchen and really cooked something for the members of your family? So applied means how particularly we notice. हमारे पास ग्रामर की बुक है, वी हैव द बुक ऑफ ग्रामर, वी हैव द ट्रेन्ड टीचर्स, बट यू ऑल नो दैट देयर इज ऑलवेज a very different phenomenon when this language enters our mind and it becomes a part and parcel of our personality. Okay, so from the grammar book, okay, from the vocabulary book, when it enters in our life and then we start using it practically, this whole process creates another language. This is called interlanguage. Clear? And I was talking about this Larry Selinger, American professor who was a professor of applied, not discussing terms exactly, applied linguistics, whose article Interlanguage appeared in the January issue of journal International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. Okay, so this is something very, very important information. I'm sorry. Now I'm reading about the examples. Interlanguage reflects the learner's evolving system of rules. You all know that when we start learning a language, okay, we develop with that language. Okay, we keep it is not always very easy. We know that we have the concept of article and tenses. We are taught these topics are taught to us in 6th standard also, in 7th standard also, in 8th standard also. Then year after year we learn this language. Okay, we evolve. So this learner's evolving system of rules and results from a variety of processes, including the influence of the first language. What is the influence of the first language? For example, suppose in your area, or on television, or in a movie, or somewhere in your life, you must have seen that the people who speak English, somehow they are either valued in the society, or they are earning more, or they are talked, when they go, they are talked about in a very favorable manner. People just praise them if someone speaks English. You must have noticed all these things somewhere in your society, and then psychologically you start learning that language. So this is called this atmosphere, or the things which are associated with a particular language. And here the topic of our discussion is English language. So interlanguage reflects the learner's evolving system of rules. This is first. Second, the results from a variety of processes, including the influence of the first language. Clear? Influence of the first language and target. Influence of the first language means
how much mother tongue you are already expert in. Okay, contrastive interference from the target language. How many things you can contrast, whenever anything is given to us in a foreign language, we try to isko contrastive linguistics bolte hain, we call it contrastive linguistics. We start comparing whatever things are there in our language. For example, most of the times I've come across that teachers, when they are teaching grammar, when they answer the students, for example, suppose I'm teaching gerund, okay, then students mostly ask us a question that what is the Hindi of gerund. For example, when we teach noun, students say like what we call it in Hindi, okay, because we want to contrast the features of this foreign language items with our language. When we have certain things which are equivalent in our language, we feel very comfortable and we just learn it very fast. So that's why it is written that this interlanguage creates when it is created around us. Okay, what I am doing, Mr. Arfain, I'm teaching point to point. आप एक काम करिए, मेरे ब्लॉग पे चले जाइए, मैं वहां से रीड कर रहा हूं. क्लियर? I'm पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं चीजों को. आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है. पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है? आपके पास दूसरी स्क्रीन नहीं है क्या? So you can just see like what I'm reading from there. I'm teaching interlanguage, okay, and I'm reading point to point from the interlanguage. If you don't understand it, be patient. You will be able to understand this. Clear? Okay. So what I was talking about, that we create a language when we are learning a target language. Okay, so in between our mother tongue and the target language, there is created a system during the understanding or developing the whole system of language, which is called interlanguage. Okay, and in that there is one aspect, this is called contrastive linguistics. Okay, and then the overgeneralization of newly encountered rules. And write down this concept. ये आपको exam में पूछ सकते हैं. They will ask you this question: overgeneralization. What is this overgeneralization? For example, like teacher teaches you that any word which is a noun and we are making it a plural in English, then we use s at the end. For example, pencil, pencils, boy, boys, girl, girls. Okay, then a common student feels that any word can be made plural by adding s. So when we say radius, so he feels that radius is already a plural word. This is called overgeneralization. Or say, suppose I ask him that radius is not a plural word and you make it plural, then he or she will do radiuses, suppose. Then this is an example of overgeneralization. Overgeneralization means we tend to generalize things. For example, you go to a city, okay, first time, and then somebody picks your pocket, आपका पर्स कोई मार लेता है. Okay, then you generalize the people of that city that ये शहर तो खराब है, यहाँ के लोग तो गंदे हैं. This is called overgeneralization. In the same manner, sometimes we have many anomalies in a particular language. In our Hindi also we have different anomalies. लिखो एक term, लिखो anomaly. Anomaly का मतलब होता है there are different features which are not same and cannot be converted. For example, yeah, Huma Khan has given us a good example. For example, news. अगर किसी स्टूडेंट को हमें न्यूज सिखाना है तो न्यूज इज ऑलरेडी अ वर्ड विच इज सिंगुलर. जैसे इंग्लिश में कहावत है, देयर गोज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश दैट नो न्यूज इज गुड न्यूज. ओके, फॉर एग्जांपल hair, HAIR. Now hair is a single or we say that it's uncountable noun. So suppose I say that look at your hair, how dirty it is, why don't you shampoo it? Now we are using it for hair. So a student who is from India or say Pakistan or Bangladesh, where we have this work like अपने बालों को देख इनको shampoo कर, we use बालों, that is a plural entity in our plural word in our language. But when we translate it, okay, if we don't learn the rule, then we tend to overgeneralize, that we will say hairs, and hairs is not the exact entry in English. Hairs is used in a very different manner. Suppose 5 gray hairs. अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे हमने कहा सफेद बाल, तो वी से लाइक व्हाइट हेयर, बट एग्जैक्ट इंग्लिश विल बी ग्रे हेयर. So these are the examples of the overgeneralization. So don't you think that
whatever errors, like yesterday I taught you 3 or 4 poems, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, सभी पोएम्स पे क्वेश्चन आया हुआ है. हमेशा याद रखिए, इफ आई एम टीचिंग समथिंग देन इट इज ईदर इंपॉर्टेंट राइट नाउ और गोइंग टू बी यू आर गोइंग टू सी दैट इन योर एग्जाम. क्लियर? तो अभी मैं देख रहा था, व्हेन आई वाज जस्ट रफलिंग थ्रू द पेजेस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, देन आई सॉ देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम निसिम एज़कील. देयर वर 4 poems and they asked, like, which out of these 4 poems is not making fun of the Indian English. Okay, so today I have come up with interlanguage, this topic, because interlanguage we have developed the kind of erroneous English, the kind of in between English, which is not based on the particular rules of English. That is called interlanguage. तो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया कि इसमें क्या क्या होता है. ओवर जनरलाइजेशन हम कर लेते हैं ऑफ द न्यूली एनकाउंटर्ड रूल्स. अब आता है एक टर्म, लिखिए फॉसिलाइजेशन. कैन यू सी दिस फॉसिलाइजेशन? This is another term. This is one of the terms included in interlanguage. Write down fossilization. कितने बच्चे हैं, लिख के बताइए, जिनको fossil word का मतलब पता है? How many of you are aware about the term fossil? F-O-S-S-I-L. Fossil. Are you really watching me? Are you really learning something? Do you think this class is important? If it is so, then please write something. And those who will watch it on the YouTube, kindly write a comment at the end of the session. Okay. Okay, that's great. Okay. Then fossilization. लिख लिया आप लोगों ने? Have you written the term fossilization in your copy? Okay. Let me explain first of all what is a fossil. Fossil, as you all know, we study in our lower classes that when something is in a rock, suppose an animal dies, okay, and over time there is sand or say soil, gets it is covered by the soil and all, then later on there remains a particular mark on that. Clear? So जब कभी when we are unearthing something or when we are digging at something, sometimes we come across like some, जितना भी dinosaurs का knowledge हमें मिला है, that is from the fossils. Clear? So the remains of the dead animals or say dead plants and everything, they have certain remains or they have certain marks. Clear? Of their time. That is a word we use, okay, in archaeology. Now in linguistics, suppose they ask you a question like, what is fossilization? Fossilization is that when during the process of learning a second language, okay, like suppose you are learning something and out of nowhere, suppose certain rules are either overgeneralized or certain rules which were not cleared by your teachers in the classroom, or you must have heard it around you, okay, and then you start using that rule of grammar or pronunciation in the same manner, okay, and that after some time you come across the correct rule, but you find that that has been already become a habit in you, then we call it fossilization. It is very tough for someone to come out of fossilization. That's why we always say when we teach the teaching methods, that suppose in India we have a very popular method of teaching English. Can you tell me what is the most popular method of teaching English in India? You all know that this is one of the topics in our exam. They will ask you any questions. So with this kind of discussion, you will be able to solve more questions. Kindly tell me, which is the most important and popular, not important, I would say popular method of teaching English in India, or say countries around India? Most popular method of teaching English. Translation. We call it grammar translation. Yeah, because you must have seen that teachers, they tend to ask the students, they write the rules, then they explain it into Hindi, like I'm doing. I'm also using a kind of though I'm not teaching you grammar, okay, I'm a teacher of literature, but in literature also, when we teach literature, we don't tend to remain in English. That is the problem, that when I teach directly in English, many times it comes it brings a problem to many of my South Indian students, or say Assamese, or say Bengali students, that don't speak Hindi in between. Why they say so?
because to make comfortable my North Indian students, I tend to speak in between the translation or the translated version of whatever I'm speaking. Okay. Now, from where that has come? Because somewhere our teachers make us comfortable by translating the things. Clear? So the answer to my question, that the most popular method in India is grammar translation method. That is okay. Now the question comes like, when we are translating things, or suppose we don't consult a dictionary, then we tend to pronounce certain things in a different manner. We have our own system of pronunciation we have developed over time. For example, there is a word Guardian. How many of you know this exact pronunciation of this word? Guardian. Is it guardian or guardian? Because you can't speak right now. If you speak, I won't be able to understand you. I won't be able to hear you. So let me tell you that it is not guardian, it is guardian. Now, extempore, another term I'm using. Now, most of the teachers say extempore. Okay. Because they never consulted dictionary before speaking it. Okay. So, hundreds of examples are there. If I take the phonetics or the phonological aspects of, pure English means Queen's English, and when it comes to us, we altogether change many patterns of the spoken English also. Okay, the phonological aspects. So fossilization is the process of learning a second language, is characteristically non-linear and fragmentary. Okay, it is non-linear. We don't learn it in a very linear manner. Okay, and we learn it in a fragmentary manner, marked by a mixed landscape of rapid progression in certain areas but slow movement, incubation, or even permanent stagnation in others. Permanent stagnation in others mean to say, मैंने हालांकि इसको बहुत easy करके समझा दिया कि fossilization का exact meaning क्या होता है, that the way a teacher is teaching, suppose a teacher from America or say England comes to us and he wants to teach us this language in a particular manner, then you all know that we have to create interlanguage. We directly cannot learn this target language easily. Okay, in the same manner, in the manner in which they learn their language. Okay, because to learn a language, there are many different aspects which have to be learned in the very beginning. Okay, so ये मैंने आपको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का एक और एस्पेक्ट समझाया, इंटरलैंग्वेज के बाद ओवर जनरलाइजेशन, तीसरा टर्म हमने क्या सीखा था बताइए, स्पीच एक्ट्स. ओके, एंड फॉसिलाइजेशन भी मैंने आपको समझाया. अब आ जाइए एक टर्म पे लिखिए यूनिवर्सल ग्रामर. राइट डाउन अनदर टर्म, universal grammar. They already had asked us a question on universal grammar also in net exam, but I'm explaining it in detail so that they can ask you questions. Okay, and I also told you that Larry Salinger's name, the person who gave us the concept of interlanguage, he was an American professor. Okay, so these are the 5 questions you learned out of this discussion. Now let us come to this next concept on my blog, that is universal grammar. Those who are very serious to attend this lecture should go to my website mukeshpareek.com or englishcosmos.org. You can search there my blog. I have uploaded the things there. चलिए, यूनिवर्सल ग्रामर पे आ गए तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूं. Okay. A number of researchers pointed out quite early on the need to consider एक मिनट, एक काम करते हैं, मैंने यूनिवर्सल ग्रामर के लिए अलग से पोस्ट डाल रखी है, उसको पढ़िए. ओके, यूनिवर्सल ग्रामर इज अ थियरी इन लिंग्विस्टिक्स यूजुअली क्रेडिटेड टू नोम चॉम्स्की. तो एक इंपॉर्टेंट, एक अमेरिकन, अभी वो ही इज स्टिल लिविंग, इज वेरी ओल्ड नाउ. नोम चॉम्स्की इज अ नेम इन लिंग्विस्टिक्स टुडे. यू ऑलवेज कम अक्रॉस. मैं आपको बता देता हूं कि व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस लांग एंड पैरोल, द 2 terms given by Saussure. So in some of my other lectures I was talking about lang and parole, okay, and competence and performance. If you remember, these are the 2 terms used by Noam Chomsky, for these 2 terms, lang and parole. Lang means system of language, rules of language, and parole means the performance, the way you speak a language. Okay, so Noam Chomsky, I'm reading this name, he is credited to give us the concept of universal grammar. अच्छा, आगे इससे पहले कि मैं डिटेल में पढ़ूं, एक बहुत बेसिक चीज समझ लीजिए, that what is universal grammar. Noam Chomsky says that
It's not like every grammar has a system of its own, but human brain has in itself an ingrained and natural ability, to structurize or to put things into structure. Okay, so this is called universal grammar. आप पढ़िए इसमें से क्या लिखा हुआ है. He suggests that the ability to learn grammar is built into the human brain from birth, regardless of language. कोई भी लैंग्वेज आप हमें सिखाइए, हम कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिकली उसकी ग्रामर सीख जाते हैं. ओके, लाइक सपोज समबडी इज, देखिए हम लैंग्वेज को दो तरह से सीखते हैं. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो दैट वन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज कॉट एंड अनदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज टॉट. अगर हम स्कूल नहीं जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, my father was transferred into Jammu and Kashmir. Okay, I was of say 6 or 7 years old. Okay, so when we went to Kashmir, तो हम लोग जम्मू से पहले कठुआ एक जगह है, वहाँ पे रेलवे जालंधर से ऑनवर्ड ही इन द जनरल कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, उस जमाने में रिजर्वेशंस नहीं हुआ करते थे, कम होते थे मतलब. तो मुझे अच्छी तरह से याद है दैट वी लर्नड मैनी वर्ड्स, वी 4 ब्रदर्स. जैसे most of the people right from Jalandhar onward, Jalandhar, Amritsar, and when we were moving towards Pathankot and Kathua, in the train we learned many words like aho. पंजाबी में कोई किसी को ऐसे बोले हाँ तो वो बोलते आहो. अच्छा, फिर जब तक हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हम बहुत सारे वर्ड जान चुके थे, बिकॉज दे वर वेरी कॉमन रेकरेंस इन द पीपल. जैसे की होया, वी वर सो स्मॉल एंड हमने इससे पहले कभी पंजाबी नहीं सुनी थी. ओके, बट पंजाबी एंड डोगरी दैट मिक्सचर वाज देयर. और एक फॉर द सायरन, जैसे मेरे फादर वाज अ मैनेजर इन अ मिल, सो मिल का सायरन बजता है ना, तो उसको वो लोग बोलते हैं कुग्गू. तो आवर सर्वेंट यूज्ड टू से द वेरी फर्स्ट डे व्हाट वी लर्नड a particular sentence, कुग्गू बज्जा आहो, कुग्गू बज्जा आहो. तो we very easily adopted that language. Okay, then after some years my father was transferred to Punjab and we systematically learned the Gurmukhi and the rules of Punjabi language. अब मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं, because though Punjabi, Dogri, these languages are not exactly foreign to us, okay, but suppose you ask a child, suppose हम लोग इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, we get shifted to England and we don't go to a school, okay, or our child does not go to a school, then there is an atmosphere around and very easily when we notice people we can catch English, clear, and when we are catching the words we can structure them in our minds. Okay, so that is the inbuilt ability of our mind to structure a language and its grammar, that is called universal grammar. तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. Chomsky did not believe that exposure to a language was enough for a young child to become efficient at understanding and producing a language. ये क्वेश्चन आ सकता है that though he said that we have an inbuilt ability to understand a language and to adopt its grammar, okay, but that is not sufficient. Noam Chomsky also says that that is not sufficient. A student who has learned this way cannot become a writer. He won't be able to produce many kind of sentences. Okay, for that, जैसे आप लोग हो, आप एक बात बताइए, if you write something, अगर मैं आपका टीचर बनूं और ऑफलाइन क्लास चल रही हो और सपोज आई आस्क यू, आई गिव यू अ टास्क टू राइट समथिंग, then I will check you that how many kinds of different patterns of sentences you are making. मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं इस पे, आप मुझे इजाजत दो पहले कि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा बोलूं, बिकॉज if I speak on this topic it is ultimately going to help you in understanding different questions of linguistics in your exam. Give me permission so that I speak on this topic also for some time in between this lecture of interlanguage and universal grammar, fossilization. I'm waiting for your answer. If you say yes, only then I will extend this particular topic. No answer is coming. Okay, Huma says yes. Okay. अच्छा, एक बात बताइए, when you write something, suppose you write something, then I, being a teacher, have come across many students
who are in between their writing, unable to identify the exact need of the passive sentences. Okay, उनको passive sentences का knowledge नहीं है. They mostly write their whatever they write in active sentences. Okay, and they even don't know the exact usage of different tenses. Now I'm not using the word use, I'm saying the word usage. लिखिए एक word USAGE, usage. We pronounce it usage. Okay, ध्यान से सुनिए और जाइए मत क्लास छोड़ के. ओके, ताकि आपको टॉपिक समझ में आए. देखिए, जॉर्ज ऑरवेल ने पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे में 6 पॉइंट्स दिए हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, जिसपे क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में. उन्होंने कहा है कि अपने ओरिजिनल सेंटेंसेस यूज करो, रटी रटाई, ऑलरेडी अवेलेबल idioms एंड phrases you should avoid foreign phrases. This essay is all about that. Okay, and then he says at the end that don't use passive voice until it is necessary. Now a very less number of students understand that why he is giving this suggestion. Do you know the exact meaning then that why we are taught passive? You must have known that we call it voice, active voice and passive voice. तो मैंने आपसे इजाजत इसलिए ली है कि मैं इस पे ज्यादा बोलना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास में, सिंस वेरी अर्ली वी आर टॉट इन द ग्रामर क्लासेस, ये एक्टिव सेंटेंस इसको पैसिव में चेंज कर दो. ओके, बट वेरी लेस नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर हु डिवोट देयर टाइम इन एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पैसिव्स. हमें क्यों पैसिव सिखाया जाए, इसीलिए मुझे ग्रामर के टीचर्स और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेंटर्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं और जो लर्न करते हैं वो मतलब उतने इंटेलिजेंट नहीं लगते हैं, क्योंकि दे नो ऑल द रूल्स. ओके, बट दे डोंट नो दैट व्हाई दीज रूल्स आर देयर. तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि पैसिव की क्या इंपॉर्टेंस होती है. जैसे पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है. तो सपोज आई राइट, जैसे मान लीजिए मैं एक ऑफिसर हूं और मैंने एक मीटिंग पैड के ऊपर एक सर्कुलेट किया एक नोटिस, और मैंने ऐसे लिखा, it is informed that you are required to be present in the meeting hall at 1 o'clock. This is my sentence. These 2 sentences are in passive. Now like I'm highly qualified. Okay, one day when I was teaching in an institute, and there came a circular, and in that circular the head of the institute, he wrote this language in passive. I was too much annoyed. I did not sign that. लेकिन बाद में मुझे बाकी फ्रेंड्स ने कहा कि तू ज्यादा क्वालिफाइड है, तो तुझे पता नहीं इसमें क्या ऐसा समझ में आ रहा है कि तू साइन नहीं कर रहा. साइन कर दे, अपन मीटिंग अटेंड कर लेंगे, फिर हमें बता देना तुझे क्या लगा. मैंने देखा कि मैं इसको थोड़ा सा डाइग्रेस करके समझाता हूं. देखो, मैं ऑफिस के सामने से निकल रहा हूं और कांच लगा हुआ है, और जो मेरा ऑफिसर है या मेरे प्रिंसिपल है वो मुझे देख रहे हैं, तो वो मुझे आवाज लगा के भी बुला सकते हैं, मुकेश इधर आओ. लेकिन सपोज वो बेल बजाए, आपको क्या लगेगा? आपको लगता है कॉलोनाइज्ड तरीका है बेल बजाने का. आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा नोटिस बोर्ड्स पे, आज्ञा से. पहले बताओ हाँ में जवाब दो. लिखा हुआ देखा है कहीं आज्ञा से? दिस इज ऑल कॉलोनाइज्ड मेथड्स ऑफ गिविंग मैसेजेस दैट योर बॉस कंसिडर्स हिमसेल्फ सीनियर. ओके, और ये जो हायरार्की मेंटेन होती है ना, ये लैंग्वेज के थ्रू होती है. एंड जब आप ज्यादा क्वालिफाइड हो जाते हो, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नोबडी इज योर बॉस. You all are equal. We run an institution and we all have our own responsibilities. तो लैंग्वेज में अगर कोई आदमी अपने आप को ऊंचा दिखा रहा है, पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर उसने कहा कि it is informed that, उसको लिखना चाहिए I inform you that. तो if he writes with active sentence, then he is present. It means the person who is reading the sentence, he has a communication, one-to-one communication. ये आपको इसलिए समझा रहा हूं, लाइक सपोज आई एम राइटिंग अ बिजनेस लेटर, ओके, एंड वी से दैट गुड्स आर रिसीव्ड. नाउ गुड्स आर रिसीव्ड इज अ पैसिव सेंटेंस. इट अनॉयज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन. गुड्स आर रिसीव्ड का मतलब होता है कि आई हैव डिटैच्ड माई सेल्फ, एंड द पर्सन हु इज राइटिंग द सब्जेक्ट इज नॉट बीइंग मेंशन्ड ओवर देयर. उसको लिखना चाहिए वी हैव रिसीव्ड द गुड्स. मतलब आप बार बार अगर अपने आप को सब्जेक्ट की तरह वहां प्रेजेंट करते हो, देन इट मीन्स यू आर ह्यूमन बीइंग एंड दिस लैंग्वेज इज मोर ह्यूमेन. पहले बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं? इट्स वेरी टफ एस्पेक्ट. इट टेक्स लॉट मच टाइम फॉर मी टू मेक पीपल
understand that why actives are more important and passives create differences, because in passives के अंदर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है. और नेचुरली आप कभी किसी अंग्रेज को देखना, इफ यू रीड अ नॉवल इन डिटेल और सपोज आई गिव यू अ टास्क, एंड थैंक गॉड नेट में वो ऐसे क्वेश्चन सब धीरे धीरे पूछने लगे हैं. रिसेंटली आई गॉट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड आई न्यू दैट जिन्होंने मेरे लेक्चर को ढंग से अटेंड किया, ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन आंसर दैट क्वेश्चन. So I deliberately gave this lecture on active and passive and this concept of voice कि केवल ग्रामर पढ़ने से काम नहीं चलेगा. that Ram eats food and the food is eaten by Ram. आपने सिर्फ एक्टिव से पैसिव पढ़ा दिया स्टूडेंट को, but you never told the student where to use that passive. Okay, तो इसीलिए वो कभी भी लैंग्वेज में वैरायटी नहीं ला पाएगा. wherever your subject is missing, आपको जैसे आपने कहा कि दिवाली is celebrated in October. Diwali is celebrated. Now why we say Diwali is celebrated? This is the passive sentence. It means someone who is not from that community can write that sentence. वो अगर खुद दिवाली सेलिब्रेट करता है तो वो बोलेगा we celebrate Diwali in October. अब इसमें भी एक ambiguity आ जाती है. There is a concept of ambiguity in language. वो कैसे आती है? Suppose I say we celebrate Diwali in October. इसका मतलब है आप किसी से कह रहे हो कि भाई हम तो दिवाली अक्टूबर में सेलिब्रेट करते, तुम कब करते हो? इट मींस दिवाली सेलिब्रेटेड इन ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, है ना? तो एम्बिग्यूटी आ गई कि अच्छा हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. तो इस एम्बिग्यूटी से बाहर आने का एक तरीका, देयर इज अ मेथड ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस एम्बिग्यूटी, दैट दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर. यू राइट इन पैसिव, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी दैट दिस सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव. सो मैंने ये एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्यों समझाया आपको, क्योंकि नाउ अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं. इनफाइनाइट जो होता है ना, इन्फिनेटिव एंड जिरंड. इन्फिनेटिव क्या होता है? लाइक वी यूज स्ट्रक्चर टू प्लस first form of the verb, okay, and in gerund we use first form ing. So suppose I say I like to swim. Now this is the use of an infinitive. I like to swim. And suppose I say I like swimming. Now the translation of both the sentences is same. I like to swim का मतलब क्या होता है बताओ? मुझे तैरना अच्छा लगता है, मैं तैरना पसंद करता हूँ. And I like swimming is also like मुझे तैरना पसंद है या मैं तैरना पसंद करता हूँ. Now what is the difference then? So a teacher through grammar, a lot much brainstorming will be able to teach this aspect that infinitive is used for momentary purpose. For example, मैं अपने स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास स्विमिंग पूल है खुद का. एक फ्रेंड आता है और मैंने कहा तू भी तैर ले आज, है ना, उतार कपड़े, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पड़ा है, पहन ले और आजा तैरते हैं. तो उसने कहा हाँ यार गर्मी मुझे भी लग रही है, आई लाइक टू स्विम, दो आई डोंट लाइक स्विमिंग बट आई लाइक टू स्विम टुडे. अब देखो देयर कम्स अ डिफरेंस. जैसे आई लाइक टेकिंग टी, इट मीन्स इट इज अ हैबिट, ओके, और इट इज माई जनरल लाइकिंग. वेन एवर यू ऑफर टी आई विल लाइक टेकिंग टी. बट सपोज आई से आई जनरली डोंट लाइक टेकिंग टी बट टुडे आई लाइक टू टेक टी. सोचो, तो इट्स मोमेंट्री. नाउ दीज आर द न्यूएंसेस. इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिखो न्यूएंसेस ऑफ लैंग्वेज. आज मैंने लिंग्विस्टिक्स के एस्पेक्ट्स टच कर लिए थोड़े से, so that you people can be informed more about language and all. क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए वहां. Nuances, nuances, nuances and subtleties. Subtle, there is a word subtle, subtle. Subtle means B is silent. Subtle means something which is not clear on the surface. You have to go into the depth of certain things. Clear? Only then you would be able to understand the exact meaning. अब मैं क्या देखता हूं जब मैं इन सब चीजें पढ़ाता हूं नेट की क्लास में, ज्यादातर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उनके 12th लेवल में या ग्रेजुएशन में ग्रामर के टीचर्स ने अपना केवल मैकेनिकली ग्रामर पढ़ाई है. उनको कभी भी इस तरह से नहीं समझाया. सपोज आई गिव यू अ पैराग्राफ एंड आस्क यू हाउ मेनी वर्ड्स आर नाउन्स, तो बहुत से स्टूडेंट्स उसमें से नाउन नहीं पहचान सकते, बिकॉज जिरंड इज ऑल्सो नाउन, जिरंडियल नाउन बोलते हैं उसको. ओके, लाइक सपोज स्विमिंग इज माई पैशन, देन स्विमिंग ऑल्सो बिकम्स अ नाउन. तो मैं ये एक्सरसाइज बहुत सारी करवाता रहता हूं बिकॉज एनी डे यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो इन योर नेट एग्जाम, दैट इफ यू आर क्वाइट कॉम्पिटेंट इन दिस लैंग्वेज, you want to be a teacher. So it's not only हमारे टीचिंग मेथड्स में भी ये सब चीजें आती है कि आप एक टीचर होकर के आप कैसे इंग्लिश को दूसरों को सिखा रहे हो. तो इंग्लिश में हम देखते हैं कि ग्रामर को बिल्कुल भी फंक्शनली नहीं सिखाया जाता है. एंड दैट इज द रीजन
That is the reason that this writer, Noam Chomsky, what he says that it's not only the caught language that you learn a language by just thrown out words around you by living in an atmosphere. You need to understand the nuances. You have to learn making different sentences. Okay, and then variety of sentences. If you learn idioms of a language, only then you would be a smart person who would be able to understand a native speaker and would be able to produce your own sentences. Clear? So आगे पढ़ रहा हूं. Chomsky did not believe that exposure to a language was enough for a young child to become efficient at understanding and producing a language. Okay, he believed that humans are born with an innate ability to learn language. According to Chomsky, ये क्वेश्चन आएगा आपको कि Chomsky believes that we have an innate का मतलब होता है inborn ability to understand language. जब भी कोई हमारे सामने कुछ बोलता है हम ऐसे कर लेते हैं, अच्छा क्या कह रहा है वो हम we try to catch this word. Okay, it means we are naturally tuned to catch languages. Clear? According to Chomsky's theory, the basic structure of language are already encoded in the human brain at birth. Okay, हमारे ब्रेन में ऑलरेडी लैंग्वेजेस फिट करके भेजी है भगवान ने. This universal grammar theory suggests that every language has some of the same laws. For example, every language has a way to ask a question or make something negative. Okay, सभी लैंग्वेजेस में नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, सभी लैंग्वेज में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सभी लैंग्वेजेस के अंदर सभी लैंग्वेजेस में टैग क्वेश्चंस हैं. ओके, सभी लैंग्वेजेस में कुछ खास किस्म के फीचर्स हैं which are almost similar, only the words are different. Clear? Or there can be more words for a particular thing. For example, the people who live more those people who are living closer to the sea, they have more words for sea than we people who are living in Rajasthan. ठीक है? Every language has a way to identify gender or show that something happened in the past or present. So ये इसका मतलब है कि सभी दुनिया की जितने भी लैंग्वेजेस हैं सब में टाइम का कॉन्सेप्ट है, जेंडर का कॉन्सेप्ट है, टैग का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है. इट मीन्स समहाउ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर यूनिवर्सली मेड. Okay, the basic grammar laws are the same for all languages. A child needs only to follow the particular set of rules that his peers follow in order to understand and produce their native language. ये मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से, और मैंने I have already uploaded it on the blog so that you people can read it after that. मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप डायरेक्ट ब्लॉग पे नहीं जाएंगे. पहले बताइए, have you been following that rule now? You kindly visit my website. And from website you should go to blog. That will ultimately help me in hitting more on my website. अच्छा, अब आइए नेक्स्ट टर्म पे आइए, ब्लॉग पे बताइए क्या टर्म है. Come to the next term. You are going to inform me what is the next term on my blog. After this interlanguage, fossilization, okay. After that, this universal grammar. I have uploaded one more term today. Tell me what is written on my blog. Yes, Huma Khan, the most active student of this group. APORIA. लिखिए APORIA. ये आपको एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन. But I'm teaching these concepts because they will ask you now from a different angle, the same questions. Okay? APORIA क्या होता है? एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो वे अहेड. आपके रास्ते जब आगे ब्लॉक हो जाए तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में अपोरिया. और अगर मैं सपोज आई एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इजी मैनर, देन व्हेन सम डाउटफुल सिचुएशन कम्स एंड वी एक्सप्लेन इट बाय रेटोरिकल क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल द फेमस स्पीच ऑफ हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन. Blog is for everyone. BLOG, blog. You can visit my blog. You can read from my blog. Only my PDFs are for sale. My study material PDF files, because I'm going to convert them into books in the coming time. The process has already started. So I cannot, this is my intellectual property. But blog is free for everybody. Okay. So now I'm reading. Aporia is a figure of speech wherein a speaker poses a question. Okay. As an expression of doubt. Usually about how to proceed in a certain situation.
Okay, जैसे मैंने आपको बताया, as I told you that it is a question we pose about a doubt कि यार अब क्या करें, चलो ऐसा कर लेते हैं. Okay, so thus aporia is a rhetorical question. What is rhetorical question? If winter comes, can spring be far behind? This is a rhetorical question. Okay, if winter comes, can spring be far behind? And we know that, you know, when rhetorical questions are asked, we already know the answer. Okay, so but somehow this is a typical example of human speech in which doubt is usually feigned. क्योंकि वो जो doubt होता है, जैसे आपके पापा आ गए, आपने कहा आ गए, now he's standing in front of you very much in person, then why are you asking that, you know, has he come or not? But that is a feigned one. Feigned का मतलब FEIGNED. Feigned का मतलब होता है just हम लोग थोड़ा सा pretend करते हैं that, you know, अच्छा इतनी जल्दी आ गए. So as to provoke thought in the listener or reader about how the speaker or narrator will act. The statement also allows the speaker to examine different possibilities and weigh the pros and cons aloud. The word aporia comes from the ancient Greek word aporia, in which it means without passage, like you don't have any way ahead. The definition of aporia has changed over time to include meanings such as an impasse. Write down. ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा जाता है जब हम लोग मतलब डेरिडा को पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका. ओके, इम्पासे का EIMPASSE. इम्पासे मीन्स व्हेन यू डोंट हैव एनी वे टू गो अहेड, अ काइंड ऑफ, यू नो, puzzlement, a kind of loss, a kind of dubious situation. Clear? Common examples मैंने दे रखे हैं अपने ब्लॉग पे, देखिए. Aporia is a common rhetorical technique for orators. Orators कौन होते हैं? जो वो स्पीच देते हैं. जैसे मान लीजिए मैं मोदी जी बन के बोलूं कि बताइए भाई और बहनों, क्या ये चलेगा? अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन उसका आंसर सबको पता है. ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताओ, ऐसे मोदी जी पूछते हैं. तो यू नो, रिटोरिकल ओरेटर्स जो होते हैं वो रिटोरिकल क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं. ओके, अब ये फेमस स्पीच है, देखो. आई एम एट नो लॉस फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर फैमिली, बट आई एम एट अ लॉस वेयर टू बिगिन. आई इन्वाइट यू ऑल टू माई ब्लॉग ऑन माई वेबसाइट्स. Those who are watching me on YouTube should also go to my blog and read all these things, because you know they will ask you questions from there. Okay, so this was from a famous speech. Now I'm reading from Martin Luther King Jr. His speech. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation many never come again. But why? Some say the moon. Why choose this as our goal? So the writer takes us at the end of the paragraph where he's asking us a question. But we all know that he's not asking us a question. He's simply feigning, pretending that is it the right way. So मैं आपको फिलोसॉफी बताता हूँ इसकी, कि जो अपोरिया होता है वो हमें फिलोसॉफिकली सोचने के लिए मजबूर करता है. वी बिकम मोर फिलोसॉफिकल. ठीक है. अच्छा, लिटरेचर में हैमलेट का जो स्पीच है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. वेदर इट इज नोबलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून्स, ऑल टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स, and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the headache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep perchance to dream. Aye, there is the rub. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, there is the rub. देयर इज द रब का मतलब है यही तो समस्या है. देयर इज द रब इज, रब का मतलब वो वाला रब नहीं, रब ने बना दी जोड़ी. रब का मतलब ये वाला रब भी नहीं रगड़ना. रब इज अ यू नो एलिजाबेथन वर्ड व्हिच मींस, यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम. फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ दैट ड्रीम्स में कम, व्हेन वी हैव शफल्ड ऑफ दिस मॉर्टल कॉइल. मॉर्टल कॉइल्स मींस, कॉइल मींस दिस बॉडी must give us pause. There is the respect that makes calamity of so long life.
I took time to read it because it's very important for all of us. Okay. सैमुअल बेके का जो नॉवल है द अननेमेबल, उसमें से स्टार्टिंग लाइंस मैंने वहां पे अपलोड किए. देखिए, वेयर नाउ, हु नाउ, व्हेन नाउ, unquestioning I say, unbelieving, questions, hypothesis, call them that, keep going on, call that going, call that on. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. दिस इज फ्रॉम सैमुअल बेके, द ग्रेट राइटर हु रोट दिस वेटिंग फॉर गोडो, his novel The Unnameable. Clear? This is the opening paragraph. If you remember a few days back, I gave you 100 lines on my Telegram group also, and to the different groups also, where the most important opening lines of different famous novels, I gave you. So I'm reading again from this Unnameable by Samuel Beckett, and that is, where now, who now, when now, unquestioning, I say, I unbelieving, questions, hypothesis, call them that, keep going on, call that going, call that on. ये आप देख लीजिएगा क्लास के बाद में. Okay. Then come to this I.A. Richards' 4 kinds of meanings. Come to the blog. The next entry is, today's next entry after aporia is, as I told you that aporia is also used by Derrida. Write down, that is also that when we are unable to decide the meaning, we create a kind of ambiguity somewhere. That is also called aporia. Next entry on the blog is I.A. Richards' 4 kinds of meaning. Everybody is aware that they have been asking us questions from new criticism. I uploaded 2 videos on my YouTube channel Mukesh Pareek Cosmos regarding new criticism. We also call it practical criticism. थोड़ा सा बात करते हैं कि what is new criticism, what is practical criticism. Practical criticism is against the biographical criticism. Okay. Practical criticism says that everything is there in the text. Okay. And they advocate close reading of the text. मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को समझ में नहीं आता हो कि व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म. इसको न्यू क्रिटिसिज्म कहा ही इसलिए गया क्योंकि बिफोर दैट मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वाज एनालाइज्ड बाय यूजिंग द बायोग्राफी ऑफ द राइटर, दैट व्हेन इट वाज रिटन. जैक की स्पेलिंग गलत लिखी है संजीव दुलाई ने. जैक का स्पेलिंग है JAQUE, जैक डेरिडा, आई थिंक इट्स नॉट जैक. ओके. तो व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि जब हम एक पोएम पढ़ रहे हैं, सपोज आई गिव यू अ पोएम. ओके. जेक्स, हाँ कई बच्चे सही लिख रहे हैं. अच्छा देखो, प्रैक्टिकल क्यों कहते हैं कि प्रैक्टिकली अगर मान लीजिए आपको राइटर का पता नहीं हो दैट हु हैज रिटन दिस पोएम, देन डोंट यू थिंक लाइक यू स्टार्ट एनालाइजिंग ईच एंड एवरी वर्ड, whether the writer has used monosyllabic words more, or say bisyllabic, or say polysyllabic words more, or the writer has been giving a kind of tension in the sentences, or the writer is using paradoxical sentences. Okay, what kind of imagery the writer has been using, or what kind of images he has created. Okay, so if we don't go to the biographical details of a writer and we start reading the poem per se, that is their war cry, their collective sentence, that poem per se, उन्होंने कहा क्लोज रीडिंग. आप एक पोएम को ढंग से पढ़ो, उसके अंदर से ही हर चीज निकल के आएगी. ठीक है. सो आई.ए. रिचर्ड वॉज द फर्स्ट क्रिटिक. अच्छा एक बात का और ध्यान रखिए, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में न्यू क्रिटिसिज्म आया, जिसमें आई.ए. रिचर्ड्स के अलावा आपको पता है T.S. एलियट का नाम भी आता है. ओके. क्या what their basic concepts, they all say that one should move away from subjectivity. Okay, your personal inclinations, your ideas should not be heard while you are analyzing. So that is called the scientific analysis of a text. Okay, scientific means आप साइंस की तरह टेक्स्ट को स्टडी कर रहे हो, आपको राइटर के पर्सनल इमोशन से कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, शो मस्ट गो ऑन. जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब है, मेरा मूड खराब है, और मैं उस मूड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि माई टीचिंग डिपेंड्स ऑन माई मूड. इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिस्ट शुड बी क्वाइट साइंटिफिक. ओके, एंड दे शुड वर्क. ये कहां से आ गया दादाइज्म बीच में है.
Dadaism is very personal. This is totally opposite. Dadaism नहीं आएगा. I'm so sorry. ठीक है. चलिए 4 kinds of meaning पढ़िए क्या लिखा हुआ है. I.A. Richards was the first critic to bring to English criticism a scientific precision. Precision का मतलब क्या होता है? Accuracy and objectivity. Okay? Objectivity जैसे आजकल आपको क्वेश्चन पूछते हैं नेट के अंदर, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अगर आ गया तो मान लीजिए मैं टीचर हूं तो मैं देखूंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. ओके, इसीलिए पहले जो सब्जेक्टिव पेपर होता था उसमें बहुत कम बच्चे पास होते थे, क्योंकि व्हेन यू आर जजिंग अ पर्सन देन you are putting your own personal inclinations and your likes and dislikes when somebody has written an answer. ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपकी नॉलेज को ऑब्जेक्टिवली चेक किया जाता है, साइंटिफिकली कितना आता है. Okay, he was the first to distinguish between the two uses of language, the referential and the emotive. एक ये क्वेश्चन भी आपका बन रहा है कि who was that critic who said that language has two purposes? One is referential, another one is emotional. Emotive का मतलब है एक लैंग्वेज का एस्पेक्ट होता है जिसमें इमोशंस होते हैं. जैसे मैंने कहा कि भाई सब्जी में नमक कम है. ओके, आपको क्या लगता है कैसा कितना एम्बिगुअस सेंटेंस है, क्योंकि आपको पता है घर में किसी एक को सब्जी में नमक कम लगता है, किसी एक को नहीं लगता है. ओके, दैट कैन बी अ सब्जेक्टिव थिंग. सो दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशन. ओके, जैसे मैंने कहा कि कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल दिस सीनरी इज. अब किसी को लगेगी किसी को नहीं. सो वन थिंग इज दैट दिस इज अ माउंटेन. ओके, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रेफरेंस. ओके, एक लैंग्वेज का पर्पज सॉल्व होता है जब हम उसको केवल रेफरेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं. सो ही वाज द फर्स्ट हु सेड दैट लैंग्वेज हैज टू पर्पसेस. नेक्स्ट, he will articulate it, his well articulated theory is found in his Principles of Literary Criticism. उनकी बुक है. The present extract is from this practical criticism which speaks about the 4 kinds of meaning. Richards is remembered for his modern way of teaching and studying literature. New criticism and the whole of modern tensional poetics, इसको tensional poetics बोलते हैं. लिख लो, आपको ये भी पूछ लेंगे कि tensional poetics कहाँ यूज होता है. Derives their strength and inspiration from the seminal writings of Richards. Okay, so पहला वो जो 4 मीनिंग्स है कौन कौन से हैं देखिए. एक है सेंस, दूसरा है फीलिंग, तीसरा है टोन और चौथा है इंटेंशन. अब सेंस क्या होता है, वो लिख रहे हैं कि वी स्पीक टू से समथिंग एंड व्हेन वी लिसन वी एक्सपेक्ट समथिंग टू बी सेड. We use words to direct our hearers' attention upon some state or of affairs, to present to them some items for consideration and to excite in them some thoughts about these items. In short, that we speak to convey to our listeners for their consideration can be called sense. हम उनकी senses को एक चीज की तरफ डायरेक्ट करते हैं. ओके, उसको बोलते हैं सेंस. एक मीनिंग होता है सेंस से रिलेटेड. सेकेंड इज फीलिंग. द एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट वी कन्वे is known as feeling. In other words, we have bias or accentuation of interest towards what we say. भाई देखिए, जैसे मैंने कहा, जैसे आप किसी के घर गए और आपने किसी को दिखाया कि देख कितनी अच्छी पेंटिंग है इनके ड्राइंग रूम में. इट मीन्स दिस इज योर फीलिंग दैट दिस इज. हो सकता है कि वो जो आपके साथ गया है उसके घर में वो कोई और चीज नोटिस कर रहा होगा. सो व्हेन यू से समथिंग देयर इज वन थिंग, या सेंस, टोन, फीलिंग, इंटेंशन, ये 4 मीनिंग्स है जिसमें से मैंने सेंस समझा दिया है. ओके, सेकंड वर्ड इज टोन. टोन में फर्स्ट वन इज सेंस, सेकंड वन इज फीलिंग. ओके, फीलिंग में हमारा पर्सनल चीजें जुड़ी होती है. थर्ड इज टोन. द स्पीकर हैज एन एटीट्यूड टू हिज लिसनर. ही चूजेज और अरेंजेस हिज वर्ड्स डिफरेंटली एज हिज ऑडियंस वेरीज. ओके, भाई टोन बहुत इंपॉर्टेंट. मैं कई बार पोएम समझाते वक्त कहता हूं कि टोन देखिए. जैसे मान लीजिए एक टोनल मीनिंग भी होता है कि हमारी टोन बदल जाती है. जैसे हमें किसी को, जैसे आपको मैंने एक बार मीनिंग समझाया, आपको समझ में नहीं, आपने फिर पूछ लिया, मैंने फिर समझा दिया. थर्ड टाइम यू आस्क मी एंड देन आई से बड़े मीनिंग पूछ रहा है आज तो. सो आई नो वेरी सार्केस्टिक मैनर. सपोज आपने आज तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आप 3 बार मेरे से पूछ रहे हो, सो माई टोन विल बी डिफरेंट. ओके, सो टोनल का मतलब ये समझा रहे हैं डेलिबरेट रिकग्निशन. ओके, जैसा ऑडियंस होता है उसको जिस तरह का मीनिंग कन्वे करना होता है हम अपनी टोन बना लेते हैं. फोर्थ इज इंटेंशन. अब हमारी इंटेंशन क्या होता है, क्या एटीट्यूड है, क्या हमें कोई काम परफॉर्म करना है, क्या हम उससे कुछ पैसा चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो यहां से चला जाए. देयर इज ऑलवेज अ मीनिंग विच इज रिलेटेड टू इंटेंशन. तो ये आपको याद रखना है, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन. ये 4 मीनिंग्स हैं जो आई.ए. रिचर्ड्स ने दिए हैं. अब आ जाइए प्रोसोडी. अगले टॉपिक पे आइए, फटाफट लिखिए.
आज मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टॉपिक टच कर रखे हैं ताकि आपका एक अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाए। देखिए ब्लॉग पे आगे क्या है, प्रोसोडी। व्हाट इज प्रोसोडी इन लिंग्विस्टिक्स? सुप्रा सेगमेंटल बोलते हैं उसको। लिखो सुप्रा सेगमेंटल, लिखो एक टर्म है सुप्रा सेगमेंटल। एक देखो प्रोसोडी एक वर्ड है। यस लिख के बताइए, आप लोग देख रहे हैं मुझे? आर यू स्टिल वॉचिंग मी? आर यू इंटरेस्टेड इन द लेक्चर और शुड आई फिनिश द लेक्चर? क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। कोई जवाब नहीं? हाँ, एक वर्ड है प्रोसोडी। तो प्रोसोडी पे मैंने आपको अभी एक पीडीएफ दी है, आपने नोटिस किया होगा। सो इन दैट पीडीएफ आई हैव गिवन अ होल लॉट ऑफ प्रोसोडी। जितना भी म्यूजिक होता है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ट्रोकेक क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने उसमें समझाई हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बनाने में मेरे को 2 साल लग गए उस पीडीएफ को बनाने में, और उसमें से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो प्रोसोडी, लेकिन लिंग्विस्टिक्स में भी एक प्रोसोडी होता है। क्लियर? सो वन प्रोसोडी इज इन द पोइट्री, ओके, एंड अनदर प्रोसोडी इज इन द लिंग्विस्टिक्स। सो द प्रोसोडिक का मतलब यहां पे दे रखा है, इन लिंग्विस्टिक्स प्रोसोडी इज कंसर्न्ड विद दोज एलिमेंट्स of speech that are not individual phonetic segments, okay, but are properties of syllables and larger units of speech, including linguistic functions as intonation, tone, stress and rhythm. देखो एक तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो लैंग्वेज के ब्लॉग पे नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा है? ब्लॉग पे जाइए, 21 सितंबर की एंट्री में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, एक के बाद एक मैंने अपलोड कर रखी है। ब्लॉग mukeshpareek.com पे चले जाइए या englishcosmos.org, इंग्लिश कॉस्मोस के बीच में गैप नहीं है, .org, फिर आप उस पर ब्लॉग चेक करिए। आप ब्लॉग नहीं चेक कर रहे हैं, आप केवल वेबसाइट चेक कर रहे हैं। वेबसाइट पे नहीं है, वेबसाइट के ब्लॉग पे होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं वेबसाइट के ऊपर। ब्लॉग पे जाओगे तो आपको तरह तरह की चीजें दिखेंगी। तो मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, दैट इज द प्रोसोडिक एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इन लैंग्वेज देयर आर अदर एस्पेक्ट्स विच आर सुप्रा सेगमेंटल। सुप्रा सेगमेंटल क्या होता है कि कैसे बोल रहा है, इंटोनेशन। जैसे अमेरिकन स्पीच में नेजल टोन होती है, तो किस इंटोनेशन के साथ में स्पीच को बोला जा रहा है, टोन क्या है। जैसे हरियाणवी टोन अलग है, ओके। सेंटेंस इज द सेम सेंटेंस ग्रामेटिकली is given to different people of different area, different age. तो आपको दिखेगा कि supra segmental features will be changed. कैसे? People of different languages will be using that, will use the same sentence in different intonation, in different tone. कई बार हम उसकी stress अलग, जैसे मुझे ऐसे बोलना है अच्छा हिंदी में, जैसे आज बोला अच्छा, तो जैसे अच्छा वर्ड के supra segmental aspects होते हैं। जैसे मैंने बोला आ गया, मैं जा रहा हूं, तो मम्मी ने बोला अच्छा अच्छा, लेकिन अगर मैंने रीइंफोर्स करने के बाद अच्छा अच्छा मेरे को कह रहा है अच्छा, तो ये भी एक द वर्ड इज सेम, बट देन इफ आई ऐड अ डिफरेंट टोन, अ डिफरेंट स्ट्रेस, और देख अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा 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 mama, different, the same word has different tones, it is performing different functions. उसको अपन बोलते हैं prosodic aspects of language. ठीक है? So these are the terms which I used from linguistics today. उसके बाद आप देखिए मैंने जॉन कीट्स के कोट्स particularly लेटर्स से अपलोड कर रखे हैं। टाइम बहुत कम है हमारे पास, पेपर सिर पर है, फटाफट ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, बोर मत होइए। ठीक है, चलिए लेटर्स अगली एंट्री पे आ जाइए। ब्लॉग के ऊपर जॉन कीट्स के कोट्स हैं जो उनके, देखिए वो हमेशा हमें जॉन कीट्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं। दोज स्टूडेंट्स हु आर माय रेगुलर स्टूडेंट्स, दे नो दैट आई हैव गिवन देम सेपरेट पीडीएफ्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, विलियम ब्लेक, चार्ल्स लैम, कीट्स, शेली। कीट्स का तो मैंने उनको मेरे ख्याल से ऑडियो भी दे रखा है। सो यू डू वन थिंग, आज आप कीट्स को डिटेल में पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स, प्रॉमिस करो पहले दैट यू विल रीड दैट होल पीडीएफ सेपरेटली। आज आप रोमांटिक लिटरेचर को टच कर लीजिए, थ्रू आउट द डे स्टार्ट रीडिंग दैट रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, प्रॉमिस करो पहले।
प्रॉमिस मी दैट यू विल फिनिश रोमांटिक लिटरेचर। आप सारी पीडीएफ्स को पढ़ेंगे आज डिटेल में, ठीक है? आप जब उनको पढ़ लोगे देन यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ अब हमें बहुत कुछ आता है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। चलिए, लेटर्स ऑफ जॉन कीट्स के कोट्स में से पढ़ रहा हूं मैं। इसमें पहला कोट है, आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शंस एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। ये राइटर ने लिखा है अपने फ्रेंड बेंजामिन को, एक लेटर में उन्होंने लिखा था कि आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शंस एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। आप सबको मालूम है कि ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन के लिए जॉन कीट्स को जाना जाता है। ओके, व्हाट द इमेजिनेशन सीज इज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। ये सेंटेंस वर्ल्ड फेमस है, ये आपको आ जाएगा। हालांकि जैसे ही आप ट्रूथ और ब्यूटी देखोगे, मुझे मालूम है ट्रूथ ब्यूटी ब्यूटी ट्रूथ, वो जो फेमस फ्रेज है ओड ऑन द ग्रेशन अर्न का, रिटन बाय जॉन कीट्स, तो आप उसको पता है, यू विल बी एबल टू टिक मार्क द क्वेश्चन। बट आपको आज इनको लर्न करना है, आप इनको बिल्कुल मेरा कहना मान के, क्योंकि स्टूडेंट वही सक्सेसफुल होते हैं जो टीचर को ओबे करते हैं। आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन। मैं आपको बताता हूं ये बात कि मैं इसको कैसे याद रखवा सकता हूं आपको। मैं अपने मन से चलता हूं जिंदगी में बहुत ज्यादा। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि मन से नहीं चलना चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है लाइफ में कि मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं मन का कर रहा हूं। ओके, जब मेरा when my heart says something, and that the writer says the same thing here, and that's why these are writers. And friends, you will be popular, you will be famous, you will be successful, you will be satisfied if you listen to your heart. For example, I used to teach grammar in CAT institutes. For PO and for CAT, these institutes, I used to teach grammar, and I was given a lot much salary, lakhs in month. But then before a few years, I decided that my heart is not in the grammar, because it's quite monotonous teaching the same nouns, pronouns, tenses and all. And I found that my heart was not there. Okay, my heart was in literature, and then I started teaching literature, and then this growth of mind. That though in literature I have less number of students, if I compare a class full of students coming for grammar, then मुझे कई स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर ग्रामर पढ़ाओ ना, ग्रामर से बहुत, मैंने ग्रामर की बुक लिखी है, वो बिकती भी बहुत है। लेकिन when my heart says that I should explain literature more, क्योंकि मैं लोगों को ज्यादा philosophical, ज्यादा intellectual शायद लिटरेचर से बना पाऊंगा, मैं ग्रामर से नहीं बना पाऊंगा। So my heart says that I should go for literature. So writer says the same thing, because what your heart says is somewhere the Paramatma in you, and that is the truth. Holiness of the heart's affection and the truth of imagination. And that's why these romantic writers are famous, because they say that whatever you imagine. देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 1930-40s में एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें मेट्रोपॉलिटन में लोग जा रहे हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे वो पेंटिंग आई हुई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें एवरीबडी हैज अ ग्लास क्यूबिकल, जिसमें वो पैक है, उस ग्लास क्यूबिकल में वो हर जगह जा रहे आ रहे हैं। डोंट यू थिंक दैट दिस राइटर, दिस पेंटर imagined something and which has become a truth today, isn't it? So this shows us that whatever you imagine, with purity and the holiness of your heart, will ultimately be the truth. Next quotation, the imagination may be compared to Adam's dream. ये एग्जाम में आई हुई है। He awoke and found it truth. पढ़िए सब लोग। The imagination may be compared to Adam's dream. Adam और ईव, मान लीजिए एडम ड्रीम ले रहा है, वो ड्रीम ले रहा है कि गार्डन ऑफ ईडन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ईव है, और जैसे ही वो आंख खुलती है और वो देखता है कि दिस इज अ ट्रूथ। सो ही सेज दैट इमेजिनेशन, पिछले वाले कोटेशन में उसने क्या कहा, दैट इमेजिनेशन इज ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, योर होलीनेस ऑफ योर हार्ट। इन दिस ही सेज दैट इट इज एडम्स ड्रीम। ओके, ये इन्होंने बेंजामिन बेली को लिखे थे अपने लेटर, उसमें दिया था। थर्ड, oh, for a life of sensation rather than of thoughts. He says that I want a life of sensation, a life of senses. His poem, Ode to Autumn, which says that, it's the world famous because it makes all your five senses active. Okay, that's why he says he's known as a poet of senses. Okay, so फिर से पढ़ता हूँ quote, oh, for a life of sensations rather than of थॉट्स। देखिए, जॉन कीट्स को सेंशुअसनेस का पोएट माना जाता है।
So if you ever want to try, like suppose they ask you a word like voluptuous or say sensuous, then you always remember that they must be talking about Keats. चौथी कोट पढ़ रहा हूं, ये भी उन्होंने बेंजामिन बेले को लिखी थी. I scarcely remember counting upon happiness. I look for it, if it be not in the present hour. Nothing startles me beyond the moment. Nothing startles me beyond the moment. इसका मतलब है, राइटर कह रहा है कि मैं मोमेंट में जीता हूं, मेरे लिए जो चीज इस वक्त है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The setting sun will always set me to rights. Or if a sparrow come before my window, I take part in its existence and pick about the gravel. ये जिस दिन आपको समझ में आने लगेंगी ना, you will become a real teacher to explain the exact poems. You would not require any guide, any reference book to understand the meaning of a poet. कैसे? एक बार मैंने अपनी कार घर से निकाली बाहर, and I was very angry with my kids because they were getting late. Okay? अच्छा, इतना तेज चिल्लाता हुआ मैं कार में बैठा, उनके ऊपर बड़बड़ करता हुआ कार को बाहर निकाला, और जैसे मैं कार को वेट कर रहा हूं उनके आने का, I just saw a very small sparrow in my garden. It was sucking the nectar from the tree. I just saw that bird, and for the moment being, मुझे नहीं मालूम 2 या मुश्किल से 3 मिनट, कुछ सेकंड्स भी हो सकते हैं, I was just intently looking at that bird and I forgot. और जैसे ही मैं उस बर्ड से दिमाग हटा के वापस अपने लाइफ में आया, तो मैंने देखा बच्चे कार में आके बैठ गए, and I was humming and singingly I'm driving and I forgot that I was angry. इसीलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि the moment you get associated with nature fully, you become पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर. जैसे राइटर कह रहा है कि मेरी विंडो में अगर एक स्पैरो आ जाती है, तो वो जो भी मुंह में दाना चबा रही है उसको मैं देख रहा हूं, आई बिकम द पार्ट ऑफ दैट स्पैरो. ओके, एंड दैट इज माई हैप्पीनेस. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज द पोएट हु प्रोड्यूस्ड दैट मैनी काइंड ऑफ बेटर पोएम्स. नेक्स्ट है, द एक्सीलेंसी ऑफ एवरी आर्ट इज इट्स इंटेंसिटी, capable of making all disagreeable evaporate from their being in close relationship with beauty and truth. ये भी आप समझ जाओगे क्योंकि इसमें ब्यूटी और ट्रूथ का कॉन्सेप्ट आ रहा है. देखिए, जॉन कीट्स को जाना जाता है ब्यूटी और ट्रूथ के लिए. अब अगर मैं इसकी फिलॉसफी में चला जाऊं तो इट विल टेक अ लॉट मच टाइम. बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत नेगेटिव कमेंट भी लिखते हैं कि इतना डिटेल में कोई पढ़ाता है क्या, टू द पॉइंट फैक्ट बताओ और हम चलते बनो यहां से. तो दीज आर नॉट मेंट फॉर माई चैनल. आई थिंक इसको समझा देता हूं आपको, ब्यूटी ट्रूथ कैसे है. देखो, इट्स क्वाइट फिलोसॉफिकल. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये जो अभी सुनील निषाद ने लिखा है. कैसे समझाओगे आप किसी स्टूडेंट को? सत्यम शिवम सुंदरम, जब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो जरा आपने कभी महामृत्युंजय जप किया है क्या? यस और नो में जवाब दो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स टू यू. हैव यू एवर चैंटेड महामृत्युंजय जप? महामृत्युंजय जो पाठ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्. हैव यू एवर रिसाइटेड दिस श्लोका? आपको मालूम है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? कोई भी पंडित जी के पास जाओ, वो कहता है राहु की दशा लग रही है, आपके कोई बुरा होने वाला है, इस मंत्र का आप जाप करो. नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस मंत्र? ओम त्र्यंबकम यजामहे. त्र्यंबकम का मतलब है लॉर्ड शिवा हु हैज 3 आईज, 2 और एक तीसरा नेत्र. त्र्यंबकम, अंबक मीन्स आंख, 3 मतलब 3. त्र्यंबकम यजामहे, मुझे आयु दो. सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, मुझे सुगंध दो, मतलब मैं जवान हूं. पुष्टिम, पुष्ट हूं. पुष्ट मतलब आई गेट नरिश्ड, आई बिकम हेल्दी. वर्धनम मतलब मैं डेवलप हूं, खूब तरह से ग्रोथ हो मेरी. ओके, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम. ओके, उर्वा रुकमेव बंधनात्. आपने कभी कद्दू ककड़ी खेत में देखे हैं? हैव यू एवर सीन दीज वेजिटेबल्स? ये अपने आप बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, और एक मोमेंट आता है, देन दे बिकम राइप एंड ऑटोमेटिकली गेट डिटैच्ड फ्रॉम द क्रीपर बेल. उर्वा, उर्वा का मतलब होता है वो फल, ककड़ी, कद्दू. उर्वा रुकमेव बंधनात्, बंधनों से मैं छूट जाऊं. बताओ, जिंदगी में दुखों का मेन कारण क्या है? बताओ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ योर दुखाज इन योर लाइफ? बिकॉज जैसे गांधी जी ने कहा कि यू शुड बिकम
द जस्ट कस्टोडियन ऑफ द पीपल अराउंड यू। जैसे जो बच्चे मेरे हैं, मान लीजिए मेरे किसी बच्चे की डेथ हो जाती है एंड आई एम जस्ट क्राइंग लाइक एवरीथिंग, मुझे मालूम है कि दैट इज अ ट्रूथ, ये सत्य है। इसीलिए आपको पता है हमारे हिंदुओं के शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई मरता है ना तो आप आंसू नहीं बहा सकते, क्योंकि मरने वाले का जो 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर जो है वो घर के मुंडेर पर बैठता है, और आपने जो रोए अगर तो फिर वो आंसू पी के जाता है। इसका मतलब है कि गलत माना गया है। मेरे को ऐसा याद है इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि मरने वाले के ऊपर रोना नहीं है। ओके, सो वी गेट एसोसिएटेड विद द थिंग्स, मटीरियल थिंग्स, रिलेशनशिप्स भी हमारे नहीं है, वी आर जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हियर। ओके, तो उर्वा रूप में बंधनात् मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्, मैं मृत्यु रूपी अमृत को हासिल करूं, बंधनों से मुक्त हो जाऊं, दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग। अब मान लीजिए आप रट रहे हो इसको, मंदिर में जाकर के माला फेर रहे हो, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस मंत्रा। इसका मतलब तो साफ साफ है कि आपका उसी दिन सारे कष्टों से यू जस्ट गेट डिटैच्ड ऑफ ऑल द pains and existential angst and things from your life. The moment you feel that you are temporary and whatever growth you have got, you should enjoy this and you should get detached from your material and worldly things, and that means the moksha, the salvation, the real salvation, that that you are part and parcel of this world, but you are not a custodian, you are not permanent here. Clear? So don't you think that this is the beauty of the world, okay, that you feel everything, you are just an observer, and then it becomes beautiful for you. The things become disagreeable or ugly for you because you get attached with the thing, and with attachment we have certain things to be fulfilled for our wishes. If they are not fulfilled, we see that जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस चैनल पे आए कि मैं इस चैनल पे आते ही 10 क्वेश्चन मुझे मिल जाएं और मैं एग्जाम सॉल्व कर लूं, और अगर मान लीजिए वो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता तो मैं टीचर बुरा हो गया उसके लिए। ओके, सो हमारे जो संबंध खराब होते हैं वो भी इसी चीज को लेकर के होते हैं। और एक स्टूडेंट सिर्फ इसलिए आ रहा है कि भाई मैं कुछ सीख लूं यहाँ से, तो उसका जो मेजर इंटेंशन है दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड द ट्रूथ। असली ट्रूथ क्या है बताओ एग्जाम का? कि हमें सीखना है, फाइनली हमें कुछ सीखना है। अब वो एग्जाम से क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो आपको किसी भी आदमी से कभी कोई नफरत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं उसको। द एक्सीलेंसी ऑफ एवरी आर्ट इज इट्स इंटेंसिटी। ओके, पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं। यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू हैव बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, आई अंडरस्टैंड। केपेबल ऑफ मेकिंग। चल मैं अगले पे आता हूं, टाइम बहुत कम है। ये उन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने भाइयों को लिखा था, लेटर टू जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स। ओके, हाँ निधि सिंह, ये टफ तो है बेटा, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हो ना तो आ सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम आपको कह रहे हैं तो हम इस चीज को प्रैक्टिस में लाने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई नुकसान हो जाएगा तो मैं रोऊंगा नहीं, बट देन आई रियली गेट अ मैसेज दैट दीज थिंग्स आर, मैं डेली अपने आप को एक मैसेज देता हूं कि सब चीजें यही रह जाएंगी। ठीक है। एट वंस इट स्ट्रक मी व्हाट क्वालिटी वेंट टू फॉर्म अ मैन ऑफ अचीवमेंट, स्पेशली इन लिटरेचर, एंड विच, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का एग्जाम्पल है। नेगेटिव कैपेबिलिटी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन दैट। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब राइटर ऐसे समझा रहा है कि अ मैन इज केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर द फैक्ट एंड रीजन। मतलब आप अनसर्टनिटीज में हो, आप डाउट्स में हो, लेकिन आप उनको रैशनली उनको प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो शेक्सपियर है, वो हर चीज को वैसे दिखा देता है। एक विलन है तो विलन को विलन की तरह दिखाने के लिए आपके अंदर जरूरी नहीं कि आप एक एक्टिंग कर रहे हो विलन की और आप अंदर से बुरे हो। ओके, दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। बहुत टफ है समझाना, इसलिए पूरा वीडियो आप उसको देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट। दे विल एक्सप्लेन देमसेल्व्स as all poems should do without any comment। छोड़ दो। Works of genius are the first thing in this world। ये भी important है। Nothing is fine for the purposes of great production than a very gradual ripening of the intellectual powers। Beautiful। Nothing is fine for the purpose of great productions than a very gradual ripening of the इंटेलेक्चुअल पावर। आपकी लाइफ के अंदर अगर आपको कोई ग्रेट प्रोडक्शन करना है तो ग्रेजुअल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहिए आपको। रोज धीरे धीरे अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को आप बढ़ाइए, ऐसा कह रहे हैं वो। नेक्स्ट, पोइट्री शुड बी ग्रेट एंड अनऑब्स्ट्यूजिव।
अच्छी पोइट्री, ग्रेट पोइट्री जो होती है वो अनऑब्स्ट्रूसिव होती है, उसके बीच में कुछ आना नहीं चाहिए. अ थिंग विच एंटर्स इनटू वंस सोल, ग्रेट पोइट्री हमारी सोल में आ जाती है एंड डज नॉट स्टार्टल इट और अमेज इट विद इटसेल्फ, और वो हमें चकित नहीं करती है, स्टार्टल नहीं करती है, बट विद इट्स सब्जेक्ट. ओके, केवल उसका सब्जेक्ट हमें स्टार्टल करता है. मतलब कि जैसे एक बहुत अच्छा कलाकार होता है, वो ओवर एक्टिंग नहीं करता, वो जिस तरह से नेचुरल एक्टिंग करता है कि हमें ये महसूस हो जाता है कि वो ही शायद वो किंग है. ठीक है. नेक्स्ट इज वी हेट पोइट्री दैट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस. ये क्वेश्चन आया हुआ नेट में. हम उस पोइट्री को नफरत करते हैं जो जानबूझ करके किसी टॉपिक पे लिखी गई है और पता चल रहा है कि ये आदमी, जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक पे आके पढ़ा रहा हूं और अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, अगर आपको ये पसंद है तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो. लेकिन अगर मैं मान लीजिए रोज रोज कहूं ये बात, तो पैल्पेबल डिजाइन हो जाएगा. पैल्पेबल का मतलब है आपको महसूस हो जाएगा कि ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है अपना, और फिर आपको जब मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा तो आपको थोड़ी नफरत हो जाएगी कि ये तो मटेरियल चीज के लिए आ रहा है. बट सपोज आई जस्ट से सिंपली, ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं आपको, कि मान लीजिए मैं एक खास इनहेरेंट पर्पस लेकर के, हालांकि अभी जो मेरा पर्पस है वो बहुत ज्यादा ग्रेट है, मैं वाकई स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता हूं, इसीलिए मैं फेसबुक पे आता हूं. लेकिन मुझे ये बाद में पता चला ऑटोमेटिकली, जब एडमिशन्स होने लगे, बच्चे मेरा स्टडी मटेरियल लेने लगे, मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ गया, तो मुझे पता चला कि अच्छा इसका एक मीनिंग ये भी निकला. जबकि मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से पता है, निधि को पता है, जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं, स्वाति को पता है कि हमने फेसबुक पे आना इसलिए स्टार्ट किया ताकि जितने भी बच्चे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं जो मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, वो कम से कम वो लेक्चर ले लें ताकि उनकी क्लास हो जाए लॉकडाउन के अंदर. और देखते देखते एक पर्पस से हम आगे बढ़ के पता ही नहीं चला. इसीलिए राइटर कह रहा है कि अगर आपकी पोइट्री में एक पैल्पेबल डिजाइन है तो वो एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है. ओके, वो ग्रेट पोइट्री की कैटेगरी में नहीं आती है. इसको एरिस्टोटल से लिंक करता हूं. एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि जो एक्टिंग है ना वो नेचुरल होनी चाहिए, वो लगे आपका हीरो कि वो राजा है. और पतला दुबला लड़का पतली सी आवाज में बहुत बड़ा राजा की एक्टिंग कैसे करेगा? बिकॉज हमें पता चल जाएगा कि वो राजा नहीं है. मतलब आपको पता नहीं चलना चाहिए कि पोइट्री क्या कहना चाह रही है, वो ऑटोमेटिकली आप पे अपना काम कर दे. फिर से पढ़ता हूं. We hate poetry that has a palpable design upon us, and if we do not agree, seems to put its hand in its breeches pocket. आगे का इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला पढ़ रहा हूं. Many have original minds who do not think it. कई लोगों के ओरिजिनल माइंड्स होते हैं. आप सबके अंदर एक ओरिजिनल माइंड है. जैसे मैं कई बार बताता हूं, मैं एक सेमिनार में गया था तो प्लेजियरिज्म पे लेक्चर चल रहा था कि हम साहित्यिक चोरी कब करते हैं. साहित्यिक चोरी समझते हो? इंटेलेक्चुअल थेफ्ट. तो समवन वाज रीडिंग अ पेपर, हालांकि मैं भी पेपर पढ़ने गया था, बट सेमिनार में जाने का बेनिफिट क्या होता है ये बता रहा हूं. उसने रीड किया कि हम साहित्यिक चोरी, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट इसलिए करते हैं, वी प्लेजराइज बिकॉज वी फील दैट वी कैन नॉट राइट. और उसने अच्छा लिखा है. जैसे मान लीजिए आप लेक्चरर हो या आप बनते हो, आप फेसबुक पे आके कुछ पढ़ा रहे हो, तो आपको आपके ऊपर ये शक है, मान लो कि आप अच्छा नहीं पढ़ा सकते, तो ये गलत है. आप एक बार पढ़ाइए, क्या पता हो सकता है आपका लोगों को अच्छा लगे. क्योंकि एक बार मुझे याद है मेरा एक लेक्चर था जो बिल्कुल बोरिंग था, मुझे लगा कि मैंने बच्चों को कुछ नहीं बताया, आई वॉज डिससेटिस्फाइड. पर क्योंकि मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी तो मेरे मुंह से न जाने अच्छी अच्छी बातें निकली होंगी. वो लेक्चर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मेरा एक वीडियो है क्वेयर थ्योरी पे, उस पर सबसे ज्यादा व्यूज है. जबकि अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट रेडी टू डिलीवर द लेक्चर ऑन दैट टॉपिक, लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो लोगों तक पहुंच रहा है. ओके, तो बिकॉज पैल्पेबल डिजाइन नहीं है उसमें, मैं जानबूझ करके कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं. ऑटोमेटिकली द थिंग्स विच आर सबकॉन्शियसली इन माई माइंड हैव बीन सबकॉन्शियसली डिलीवर्ड टू द मासेस. ओके, मैनी हैव ओरिजिनल माइंड्स हु डू नॉट थिंक सो. ये बताना चाह रहा हूं कि ओरिजिनल माइंड्स हम सब हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है. दे आर लेड अवे बाय कस्टम. जितना ज्यादा हम स्कूल में पढ़ते हैं और कस्टम्स, यानी हमको ऐसे कह दिया जाता है कि ऐसे ही करना है, तो उसकी वजह से हमारा ओरिजिनल माइंड खत्म हो जाता है. नाउ इट अपीयर्स टू मी दैट ऑलमोस्ट any man may like the spider spin from his own inwards his own citadel. एक आदमी एक मकड़ी की तरह अपने अंदर से अपना खुद का जाला बुन सकता है. अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं. इन पोइट्री आई हैव अ फ्यू एक्सियम and you will see how far I am from their center. I think poetry should surprise by a fine excess and not by singularity. ये कह रहे हैं कि पोइट्री को सरप्राइज करना चाहिए हमें. अगला पॉइंट, scenery is fine but human nature is finer. ये भी आ सकता है. Every mental pursuit takes its reality and worth. छोड़ दो.
उसके बाद है आई कंपेयर ह्यूमन लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I compare human life to a large mansion of many apartments, to which two of which I can only describe, the doors of the rest being as yet shut upon me. हमारा माइंड के कई अपार्टमेंट्स होते हैं. राइटर कह रहा है कि मेरे लिए केवल 2 अपार्टमेंट्स खुले हैं, बाकी के सब बंद हैं. नेक्स्ट, I am certain I have not a right feeling towards women. At this moment I am striving to be just to them, but I cannot. Is it because they fall so far beneath my boyish imagination? When I was a schoolboy, I thought a fair woman a pure goddess. My mind was a soft nest. अब देखिए which some of one of them slept though she knew it not. औरतों के बारे में इसके विचार पता चल रहे हैं. इसको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक I cannot understand women well. Next, there is an awful warmth about my heart like a load of immortality. छोड़ दो. So these are some of एक है, I think I shall be among the English poets after my death. You know, he was that much an intelligent person who knew earlier, before his death, he knew that my place is after my death will be among the English poets. उसके बाद the poet is the most unpoetical of anything in existence because he has no identity. एक पोएट जो है बड़ा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है. एक पोएट जो है वो बिल्कुल अनपोइटिकल होता है. ओके, अ मैन्स लाइफ ऑफ एनी वर्थ इज अ कंटिन्यूअल एलिगरी. जिंदगी जो इंसान की है वो एक कंटिन्यूअल एलिगरी है. अगला पॉइंट, नथिंग एवर बिकम्स रियल टिल इट इज एक्सपीरियंस्ड. तो मैंने आपको मैक्सिमम कोट्स पढ़ के सुना दिए हैं विच आई फील दैट यू नो विल बी देयर इन योर एग्जाम. बट बेटा कई लोग बाद में आ रहे हैं. दिस क्लास हैज बीन, आई हैव बीन टेकिंग दिस क्लास फॉर लास्ट 2 hours and go to my website mukeshpareek.com and the second website englishcosmos.org. I have my blog there. I have uploaded these things under the title September 21. Okay, and I'm reading from there. I have uploaded this for the benefit of the students. Okay, that's it for today. Thank you very much.